Good morning, sir. So, Good morning, sir. yes, good morning. I think all of you know that the class which is going, it will go, it will be dedicated for basically D2D students, and for you it is a revision class. For the students who are regular students, this class will be, this week will be your revision classes. Okay, because whatever we have studied, all those things will be get revised, so that all the D2D students will get acquainted with the topics. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So who is this Oppo Reno 2F? Please change your name with your name. Oppo Reno 2. Otherwise, I will not permit you in the class. Okay. So all of you, please give your attendance in chat box. So one student is waiting. Yes, yes, I am giving them the permission to join. So first of all, let me share the syllabus of digital electronics. Okay. Is the syllabus visible? Is the syllabus visible to you? Yes, sir. Visible. Yes, sir. Okay, okay. So as you can see that the name of the subject is digital electronics and logic design. Okay. So here the first module is dedicated for binary codes and Boolean algebra. Second one is Boolean function minimization techniques, combinational circuits design. Next, fourth one is sequential circuits elements, and the fifth one is logic families and VLSI design flow. I hope all of you, the new students, have joined the Google Classroom. Yes, sir. So Yes, sir. there you can find the syllabus. Okay. Yes, sir. I have also shared one book, which is the textbook, the serial number 1, in the Google Classroom. So you can download from there. There is a link. From that link, you can download the book from there. Okay. If you have any other book, then it is quite good. So, okay. So the first module is binary codes and Boolean algebra.
Please tell your friends to join within a minute, because it will be difficult for me to disturb the class. Please rename yourself by your name, not your mobile phone name. Please name yourself with your name. Whoever is not change their name. Okay, just wait for a minute. Okay, let me switch off my video. Give your attendance in chat box. All of you, give your attendance in chat box. Are you able to see whiteboard? Yes, sir. Okay. Okay, instead of going to whiteboard, I am sharing the notes so that it will be more easier for me to show you the things. So the very first topic is binary number system. Okay, so binary number system, there are so many number systems, but basically we have to study the binary. थोड़ा स्टार्ट हो गया. Please unmute yourself. All of you, please mute yourself. Okay, so firstly, we have to go through binary codes. So the binary number system. Okay, so in this case, we will have number of systems. Okay, let me share the whiteboard first. Okay. Okay. I think the whiteboard is visible. Okay, so we have to see the number systems. Firstly, number systems. Okay, so the very basic number system which we have to study is the binary numbers. As we have to cover that up to the fourth module which we are studying, so I will go very fastly as to brush up the topics for the D2D students. Okay, so we have to study binary number, and I think all of you know that in binary number we have only two base units. The base units are 0 and 1 only. So जो भी number binary number में जो भी number बनेगा, that will be made using only 0 and 1. Okay, the second one is decimal number system. Decimal number system, and in decimal number system, all of you know that the base units are from 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो that ये decimal number system आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, where all the numbers are made using only these digits. Okay, the third one is octal. Okay, so we have to see the octal number system where the base units are, so here the base units are 2, here the base units are 10, here the base units are octal means 8. So we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 and 8. Sorry, not 8. It is only up to 7. So we have total 8 number of base units. Now the fourth one is hexadecimal. Okay. Can any D2D students will tell me whether they have any idea about this digital electronics or not? The topic digital electronics or not? Yes, sir. So what We you have Yes, sir. idea. Yes, sir. Yes, sir. please one person. Yes, sir. Priyanka, please tell me that what are the topics which you have covered in your course? सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर इस सब्जेक्ट के बारे में बताना है. ओके सो आपने अपने डिप्लोमा में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है? यस सर पढ़ा है. ओके सो आई थिंक मुझे डिटेल्स में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. ओके सो इसका मतलब है मैं जल्दी से इसे कवर कर सकता हूँ. थैंक यू. यस सर यस सर. ओके सो हेक्साडेसिमल सिस्टम है. हेक्साडेसिमल में जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं वो 16 बेस यूनिट्स हैं. वो कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then A B A. C D E and so is it whether there is F also? Whether there is F also? F. यस सर. So total कितने होने चाहिए? We have 16. So we will have 16 base units here. So these are the basic things which we have to study. Except these number system, we have to the number codes, like we have to study the fifth one is BCD. BCD stands for binary coded डेसिमल. decimal. Yes, binary coded decimal. So in this case all the numbers are all the like. So in this case if we have the decimal number as 1 4 14, so I am writing here 10. So what this means? 14 base 10 means what? Base 10 means 10 base किसका होता है? 10 base decimal का होता है. So this number is Decimal. this number is represented in decimal. So if we want to convert this decimal into BCD, then for each and every digit we have to express this number in 4-bit binary. Okay, so 1 can be represented as 0 0 0 1 and this 4 can be represented with 0 1 0 0. Okay, so please wait for a minute. Okay, so we have binary coded decimal. Okay, so the next one is we have sixth one, which is access 3. Access 3. The seventh one we have to study is gray code. So this is not a number system. These are the code representation. Okay. So XH3 and gray code BCD, these are the another number systems or the codes which we have to study. So we will I will take one example or two example and I will convert all those numbers among these. Okay, so let us go through one by one. So first of all we will see the binary number. So binary number can be made with the combination of ones and zeros. So if I have a decimal number like 1 4 1 6 16, so we have to convert this number into, this is a decimal number system and we have to convert this into binary. So what we can do, we can divide this 16 by 2. Okay, so how we can convert that? So let me, okay, so this can be written as 2 8s are 16. So we are dividing by this and what is the remainder? So remainder is 0. What we have done, हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 16 को तो 8 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा. Again we can divide this by 2 and 2 4s are 8. Again in this case the remainder will be 0.
द नेक्स्ट थिंग 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4 जाएगा. नाउ वी हैव द रिमाइंडर एज 0. नेक्स्ट वी विल हैव अगेन 2 से अगर हम लगाए डिवाइड करें देन वी विल हैव 2 1 जा 2 एंड द रिमाइंडर विल बी 0. ओके, सो जो हमें बिट लास्ट में मिल रहा है दैट विल बी द फर्स्ट बिट. ओके, सो वी हैव द रिजल्ट एज 1 0 0 0 and 0. So what we can see here that we have the number as 1 0 0 0 0. Okay, so this is the binary representation of the 16. Okay, तो यहाँ पर जो हमें बिट मिला है 1 0 0 0 0. there are a total of 5 bits and in this case this जो सबसे लेफ्ट साइड में है, जो सबसे लेफ्ट साइड में है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं MSB, that is most significant bit. Okay, and the last one which is the LSB. LSB means what? LSB means what? Least significant bit. Significant bit. Okay, so here we have this total 5 bits, and in this case the leftmost bit is known as the most significant bit and the rightmost bit is known as least significant bit. ओके, और यही सेम केस हम लोग डेसिमल में भी, मान लें डेसिमल में हमारे पास कोई नंबर है 3560. सो इस केस में भी ये क्या है, जो सबसे राइट साइड में हम जानते हैं, सॉरी जो सबसे लेफ्ट साइड में हम ये जानते हैं क्या, कि जो सबसे डिजिट लेफ्ट साइड में होता है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है. तो यहाँ ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. ओके, सो ये 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 का है. ओके, सो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये जो वैल्यूज है वो कितने के रेशियो में बढ़ता है, 10 के रेशियो में बढ़ता है. तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखें, सो दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सटेंडेड फॉर्म एज this number can be represented in extended form as 3000 plus 500 plus 60 plus this 0 is for 0. so हम क्या देख रहे हैं, 3000 plus 500 plus 60 plus 0. इसे ही हमने क्या लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है. तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो रेशियो वो क्या है, रेशियो 10 के रेशियो में बढ़ रहा है. आई थिंक ये सभी को दिख रहा होगा. 3 into 1000 है, प्लस 5 into 100 है, प्लस 6 into 10 है, प्लस 0 into, क्या इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसे हम, 10 to the power 1. ये हो गया 10 to the power 0. ओके, जैसे हम इसे क्या लिखें फिर से, 3 into 10 to the power 3 plus 5 into 10 to the power 2 plus 6 into 10 to the power 1 plus 0 into 10 to the power 0. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो रेशियो है वो 10 के पावर में इंक्रीज कर रहा है. In the same way, in binary number system, we have the number here 10000. So this number in binary, इसका जो place value है वो क्या है, 2 to the power 0. ये होगा 2 to the power 1, ये होगा 2 to the power 2, ये होगा 2 to the power 3 और ये होगा 2 to the power 4. तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 2 के पावर्स में इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस यूनिट्स होते हैं सिर्फ 2 बेस यूनिट्स होते हैं. इन द सेम वे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 बेस यूनिट्स हैं तो 10 के रेशियो में बढ़ेगा. ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 बेस यूनिट है तो जो प्लेस वैल्यू है वो 8 के पावर में 8 के रेशियो में बढ़ेगा, मतलब 8 to the power 0 के रेशियो में बढ़ेगा, 8 to the power 1 इस टाइप से. हेक्साडेसिमल में वही क्या होगा, 16 के पावर में इंक्रीज होगा. ओके, सो what we can see here that in these cases we have जो वैल्यूज हैं वो एक पर्टिकुलर रेशियो में बढ़ते हैं. ओके, सो दीज आर नोन एज,
सो हम यहाँ पर जो ये कह रहे हैं ना, ये 2 to the power 0, 2 to the power 1, सो ये सारे क्या है, these all are weights, these all are weights. तो हर एक डिजिट का जो वेट है, लाइक हमने जो यहाँ पहला डिजिट लिखा, ये फर्स्ट डिजिट 0, फिर से 0 है और यहाँ फिर से 0 है. सो सभी का एक क्या है, पर्टिकुलर वेट है, और वो वेट जो है वो 2 के पावर में इंक्रीज हो रहा है. और डेसिमल नंबर सिस्टम में जो वेट है वो 10 के पावर में इंक्रीज हो रहा है. आप लोग यहाँ देख सकते हो 10 to the power 1 है, यहाँ 10 to the power 2 है, नेक्स्ट 10 to the power 3 है. ओके, so all these number systems are known as the weighted number systems. Weighted number systems means what? WEIGHTED, weighted number systems. Okay, why weighted number systems? Because the value of the subsequent क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं, that value of subsequent digits or bits are value of subsequent digits or bits are increasing by a particular weight or ratio. Okay, so this type of number systems are known as what? The weighted number systems. Okay, ये सारे number systems जो हैं वो weighted number systems हैं. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we have to see the conversion of all the number systems between one another. So firstly, we have seen the conversion from, this is the decimal to binary. Okay, we have already seen the conversion from decimal to binary. So in the same way we can, so हमें ये decimal से binary में convert करना था, तो हमने 2 से divide किया. अभी decimal से octal में अगर convert करना हो, let us take the same example. हमें क्या करना है, इसी 16 को हमने क्या करना है, this is in decimal and we have to convert this into octal. So what we will do, we will divide this 16 by 8. 8. Yes, so we will divide the 16 by 8. So what we can see here, 8 2s are 16, we will have remainder as 0. अभी ये 8 से और जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि the number what we have got lastly is 2, so it is less than 2, so we cannot divide this by 3. So we have the number as this will become MSB and this will become LSB. So we have 20 in 20. Okay, so in the same way, okay, so I have written the 16 here. So let us take another example of 18. Okay, so 18 अगर हम लें, which is in decimal, and we have to convert this into hexadecimal. Okay, so either वो 16 लिखा होगा या H लिखा होगा. Okay, so what we can do here, in the say here also we can divide the number 18 with 16, because we have to convert 16. hexadecimal. So 16 1 जा 16 और remainder कितना बचेगा, we have remainder 2, 16 और 2 18. So this will become MSB and this will become LSB. Sorry, this is MSB and this is LSB. So this is 12. Okay, so in this we can convert the things using this way. Okay, now I am taking another example. Okay, let me take the next number system we have. So we have discussed binary, decimal, octal, hexadecimal. The next one is BCD. So I think BCD, all of you have understood that if we have a number in decimal like 1414 and we have to convert this in BCD, तो हमें क्या करना होगा, जो भी नंबर है डेसिमल में उसके हर एक नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी 4 अंकों में लिखना पड़ेगा. ओके, so we will
write the binary of each and every digit of decimal number system in 4 equivalent binary bits. Okay, so 1 4 14. Next is XS3. So XS3 code जो है इसमें क्या है? XS3 we already know that XS3 means what? 3 ज्यादा. तो हमारे पास अगर कोई नंबर है like 1 3 13 और इसका हमें अगर XS3 निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसके हर एक डिजिट में 3 जोड़ेंगे, मतलब +3 यहाँ भी करेंगे और +3 यहाँ भी करेंगे. तो जो XS3 नंबर क्या होगा? We will have this will become 4 and this will become 6. Okay, so this will the XS3 number. Gray. Now what is gray? Okay, so मान लें कोई एक बाइनरी नंबर है हमारे पास 101101. Okay, so okay, let me take this example in another page. Okay, so we have a number like 10110 and this is in binary. We have to convert this into gray. So what we can do? 1011. बाइनरी का XS3 कैसे निकालेंगे? Okay, I will tell you. So this is binary and this is gray. So what we can how we can convert this binary into gray? What we will do? We will add this number with this with the operation of XOR. Okay, तो सबसे पहला ये हमारा जो नंबर है वो बाइनरी में है. ओके, हमें इसे कन्वर्ट करना है ग्रे में. तो हम क्या करेंगे? जो MSB बिट है, दिस MSB बिट विल बी रिटन एज इट इज. ये जो MSB बिट है, इस MSB बिट को हम एज इट इज लिखेंगे. अब जो नेक्स्ट बिट आएगा, दिस नेक्स्ट बिट विल बी the XOR of 1 and 0. So I think all of you know what is XOR operation. Yes sir. XOR operation जो है, इसका XOR operation का जो logic equation है, that logic equation is if we have two variables as A and B, in that case the XOR operation can be represented as A B bar plus A bar B, and this is represented as A XOR B. Okay, so this A XOR B can be represented with A B bar plus A bar B. So if we have two numbers, जो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास दो बिट्स हैं, 1 है और 0 है. तो यानी कि A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 0 है. तो A और B का वैल्यूज यहाँ पर पुट करें तो क्या होगा? A और B का वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? A का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1 और B का वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 और B का बार है. अभी A का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं और B का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं. तो हम देखें कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर. Yes sir. ओके, सो अगर हम कहें 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट कहें, सो दिस कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ बार ऑन द बिट. ओके, so this one, the complement of this one is 0 and the complement of 0, if again we will complement this 0, तो इसका जो complement आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा. इसका मतलब क्या है कि किसी भी वेरिएबल का अगर हम 2 बार complement कर दें तो हमें वापस से वही नंबर मिल जाता है. हमारे पास 1 था, हमने 1 का complement किया, मतलब 1 बार किया तो हमें 0 मिला. 0 का हमने फिर से complement किया तो हमें क्या मिला? 1 मिला. यानी कि किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें वापस से वही नंबर मिल जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर हम अगर अब यहाँ पर जो ऑपरेशन देखें, वी हैव 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब डॉट है, एंड दिस डॉट इज नथिंग बट यू कैन से एज एंड. सो वी हैव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 एज 1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 एज 0 and 0. So what will the result? Can anybody tell me what will the result? It will be 1 or 0. 1. So here we will have a 1. तो यहाँ पर हमने क्या किया? इस 1 का और इस 1 का हमने क्या किया? XOR ऑपरेशन किया. So 1 0 will be 1. Again we will XOR this 0 with this 1. Okay. So 0 1. The result will be again 1.
फिर हम यहाँ 1 और 0 का फिर से ये एक्सओर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 का एक्सओर करेंगे, वी विल हैव अ 0, और 0 इस 1 और 0 का एक्सओर फिर से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 1 1. Yes. So this is the gray of this binary. Okay, this is the gray of this binary. अभी हमें अगर फिर से करना हो क्या, ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो. ओके, सो लेट अस सी दैट हाउ वी कैन डू दैट. हमें क्या करना है, इस ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो इस बार क्या करते हैं, जो MSB बिट है, दैट MSB बिट इज रिटन एज इट इज. सो दिस MSB इज रिटन एज इट इज. MSB को हमने लिख दिया. अभी यहां पर जो रिजल्ट आया, नाउ दिस will be XOR with this one, okay, and the result will be written here. So in this case what we can see that this one और 1 का XOR करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0. Now this 0 will get XOR with this one. Now again the result will be 0 और 1 का XOR 1. तो हमें क्या मिलेगा, 1. Again 1 1 will मम्मी मुझे देखे XOR with this 0, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 0 1. Now 1. again 1 will get XOR with this one. Again we get 1 0 1 के साथ XOR करेंगे तो 0. Now you can observe that हमने क्या किया, पहले बाइनरी को क्या किया, ग्रे में कन्वर्ट किया, और इस ग्रे को हमने फिर से बाइनरी में कन्वर्ट किया. तो you can observe that both the results are same. है ना, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर Yes. है सही है. सो हम इस तरीके से बाइनरी को ग्रे में और ग्रे को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्शन ऑफ बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी. ओके, नाउ द टाइम विल गेट ओवर, सो ऑल ऑफ यू rejoin again. Okay, within a minute that this session will be over and you have to join again. Okay, Yes, sir. let me Yes, sir. let me save this, save as PDF. Okay. So please rejoin again.